उम्मीद थी सबको, क्योंकि ये एक ऐसा नेशन है जो एसोसिएट नेशन नहीं है दोस्तों। मैं अगर आपको कहना चाहूँ तो टेस्ट प्लेइंग नेशन है। इनको टेस्ट स्टेटस दिया हुआ है 2017 या शायद 18 में। तो ये परफॉर्मेंस आयरलैंड से बहुत, मैं कहूँगा कि आश्चर्यचकित हो गए सब कि यार ये आयरलैंड तो ऐसे नहीं खेलती। आयरलैंड बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और बड़ी टीम्स को टक्कर का मुकाबला देती है, पर यहाँ पे कोई मुकाबला ही नहीं है। 2 पे 2 और आयरलैंड अब फंसे हुए हैं और हाथ में अब आएंगे कौन क्रीज पर? हैरी टेक्टर, एक और आयरलैंड से प्लेयर है जो मतलब मैं कहूँगा कि सबने कहा है कि नेक्स्ट जनरेशन प्लेयर है, फ्यूचर ऑफ आयरलैंड क्रिकेट। देखते हैं कि आज कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अब तक वर्ल्ड कप में कोई परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं रही है उनके, और निराश होंगे। इतना टैलेंट अगर है हैरी टेक्टर में, जो सब कहते हैं कि बहुत है। शाहिन अफरीदी फुल जोश से आ रहे हैं और yes, we have Abel with us. Good to have you back, Abel. Good to see you again, Alin. How are you doing? All well, all well. Finally, some cricket in Florida, man. Yeah, finally some cricket and Pakistan playing well as well. Yeah, Pakistan will play well when they don't have anything to do or anywhere to reach, right? When there are no eyes on them, it seems like this Pakistan team plays well when there's no pressure. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब Absolutely. Absolutely. And I think it's a terrific start for Pakistan. Dream start. I mean, this is the Shaheen Afridi they hoped would come good throughout this tournament. And finally has come good. The OG Shaheen Afridi picking up wickets up front in the first over and picking up two big wickets, to be honest. I think Pakistan will be pretty happy with this. डेफिनेटली बहुत खुश होंगे। और यहाँ पे एक और विकेट की गुंजाइश व्यू लिया है, पर इम्पैक्ट से लग रहा है कि मिसिंग द विकेट्स या अंपायर्स कॉल होगा। इम्पैक्ट देखते हैं। पर Yeah. जी आपने सही कहा कि शाहीन शाह अफरीदी, पुराने शाहीन शाह अफरीदी दिखने मिला है हमें। Yeah. एंड नॉट आउट का डिसीजन जो था वो नॉट आउट ही रहेगा। पर एक्सीलेंट एक्सीलेंट स्टार्ट यहाँ पे। और हैरी टेक्टर को लगा रहेगा कि शायद उनके भी विकेट इस बॉल पे लिखा था। 2 रन 2 विकेट 1 ओवर के बाद the dream start that Pakistan could not get in the tournament has finally come in the last match. Yeah, exactly. And I think so far, if you look, their energy as well, they just feel like they just have to prove a point that, we were, we could compete. I mean, yeah, obviously they're out. There's nobody who's going to talk about anything anymore, but at least they want to end up in a note by saying, we could still compete if things would have gone our way. What if that US Ireland match would have happened? Things would have been different slightly. Yes, definitely. जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कुदरत का निजाम हमेशा साथ देता है, पर इस बार कुदरत का निजाम ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। तो वेदर मैं कहूंगा इस बार कुदरत का इंतकाम था, निजाम से नहीं था। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा है बिल। और हमने देखा है कि बारिश सिर्फ पाकिस्तान के पीछे नहीं, बारिश इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और सब नामीबिया सबके पीछे लगा हुआ था। एंड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स हमें लगा था कि इंग्लैंड का भी गेम नहीं होने वाला है। तो आई एम होपिंग कि सुपर एट्स में बारिश कोई भी रोल ना प्ले करे एंड वी गेट टू सी ऑल द टीम्स प्ले 20 ओवर्स ईच। And I think if you look this particular game as well, so far the ball has swung a little bit, and that's something which you would want to see. And I expected this because it's been raining in Florida for what last 1 week. The Yeah. pitch was literally under covers. The first time I'm seeing the pitch in the last 1 week in this ground. Oh, this is how it looks. But so far, yeah, I kind of expected this. Whenever whichever team was going to play first over here was always going to have an advantage bowling first because of two reasons. Pitch was under the covers, and the batting first team was going to have a tough task countering the outfield, the conditions, and even the stickiness of the wicket. And if you look, Amir as well, the first ball, tad bit of shape here. Now Amir runs in for the second ball. I don't know, I just have a feeling this is a partnership to break, and that's again a good ball outside the off stump, just shaping away. या जो मैंने मैंने पाकिस्तान और आयरलैंड के वीडियो भी बनाया था फैंटेसी का, तो उसमें मैंने कहा था कि ओवरकास्ट कंडीशन होंगी तो पाकिस्तान के पास बहुत चांसेस है टू कम इनटू द गेम। मैं सरप्राइज्ड हूँ इनफैक्ट कि नसीम शाह को उन्होंने ड्रॉप किया और अबरार अहमद को। बिकॉज फॉर मी, अगर मैं 11 सेलेक्ट करता तो हारिस रॉफ की जगह मैं अबरार अहमद को जरूर इंक्लूड करता। मिस्ट्री स्पिनर है, he gets that fear factor with him कि पता नहीं क्या गेम क्या करेगी पढ़ के। पर हारिस रॉफ को टीम में रखना was a very confusing and surprising call.
Yeah, I mean, he hasn't done anything bad so far. Last match he bowled brilliantly against Canada, so I would say it's not a bad option to go in with Harris Roth. I mean, he's done Again, nothing wrong. You look from the last game, again, but here again the अगर ball pitching पाकिस्तान outside के the leg stump. स्टैंडर्ड अगर पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स कनाडा के परफॉर्मेंस से आप जज करोगे एज अ बॉलर, तो मैं मानता हूँ कि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट फॉर सम प्लेयर्स लगता है कि रोप बहुत लंबा है, एंड फॉर सम प्लेयर्स लगता है रोप जो तुम्हारे पिछले गेम में हुआ था उतने तक ही है. नसीम शाह अकॉर्डिंग टू मी इज हैंड्स Ooh. डाउन देयर बेस्ट That's बॉलर. another wicket. That's another wicket here. Comes down the track, balls here, and he's out. He's really out. Paul Sterling has been dismissed here by Mohammad Amir. जी बिल्कुल. एंड पॉल स्टर्लिंग द कैप्टन, जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स टी20 क्रिकेट में, सिर्फ आयरलैंड के लिए नहीं, वर्ल्ड टी20 Yeah. क्रिकेट में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स. और बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा है पूरे वर्ल्ड कप में, और आयरलैंड का ना परफॉर्म करना या सुपर एट्स में कंटेंशन के लिए भी ना होना, उनके सीनियर प्रोज का परफॉर्मेंस जो गिर रहा है, there's a lot to say on about that. I think Ireland has been the most disappointing team of this tournament thus far. I mean, that's why I feel USA was an Ireland game. USA would have won it 9 out of 10 times. Looking at the form, I don't think that was a game you could have judged by saying, okay, Ireland would defeat us. I personally don't think that would have happened. But now looking at this team, Ireland played poorly against even Canada, poorly against India, and now again, I'm not surprised. I mean, this team was the biggest disappointment for me. 4 for 3 looks like a football scorecard. Euros are going on another end. I think they're just falling tribute to that. जी बिल्कुल सही कहा. और ये आयरलैंड टीम ने पाकिस्तान को अभी हराया था एक मैच में, सीरीज तो नहीं जीत पाए, Yeah. बट आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि कॉन्फिडेंस जरूर हाई होगा. और टैलेंटेड प्लेयर्स है, ऐसे नहीं कि नहीं है That's टैलेंटेड. what confuses me, Alan. I'm very surprised as to how this Ireland team is playing. Because 1 month ago, they just defeated Pakistan, scored almost 180 in every game. Very surprised here. जी इट लुक्स लाइक जो pitches इनको मिले हैं उनके स्टाइल ऑफ प्ले को सूट नहीं करते, क्योंकि पॉल स्टर्लिंग भी हमने देखा कि डाउन द ट्रैक आए, एंड ही इज अ लिटिल यूज्ड टू दोस फ्लैट ट्रैक्स. एंड आयरलैंड में स्विंगिंग कंडीशन जरूर होती हैं, पर इतने नहीं होते हैं, एंड बहुत डिफिकल्ट पिचेस मिले. बट नो एक्सक्यूज, आयरलैंड इज अ टेस्ट प्लेइंग नेशन, एसोसिएट नेशन नहीं है. Yeah. So it's here. They have a very inside. They've got an inside score here. But again, that could have been a wicket as well. Amir ran in, ball swung a little bit. Curtis Camper being very lucky in his first ball. Man, I would have loved to see a 4 for 4 scorecard. ओह या, डेफिनेटली. और पाकिस्तान की अगर बात करें दोस्तों, मोहम्मद आमिर भी जो Ooh, that's another wicket. Is it another wicket? Oh no, that was close. That was very close again. Amir ball just swung in, missed it. But I don't know why Ireland is trying to play the shot. looks like they going by the baseball school of thought के अटैक करो और प्रेशर में डालो. पर इस वक्त प्रेशर पूरा उनके तरफ है. 8 for 3 आफ्टर 2 overs. I'm just, I'm just surprised at the way how Ireland are batting at this point because that shot from Paul Sterling as well, extremely immature in terms of being a senior member in the team to play that shot. Oh man, that was just poor. जी बिल्कुल. आपको सिचुएशन को थोड़ा समझना होगा. आप सीनियर प्लेयर हो टीम में, और अगर आप क्रीज पे रहोगे एंड रन बनाएंगे तो यंग प्लेयर्स को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, एंड बैक ऑफ द माइंड वो भी अपने एबिलिटीज को बैक करेंगे टू एग्जीक्यूट द शॉट्स दैट दे वांट टू. शायद से दे नीडेड टू बी अ लिटिल बिट मोर पेशेंट. इस जब बॉल इतना ज्यादा स्विंग हो रहा है, कंडीशंस अगर बॉलिंग के फेवर में है, तो जब शाइन उतर जाता बॉल का एंड थोड़ा ओल्ड हो जाता, तो शायद आपके लिए आसान हो जाता है. बट अगेन उनके दिमाग में शायद डीएलएस का वो चल रहा होगा कैलकुलेशन, कि वो Yeah. बैट फर्स्ट कर रहे हैं. So a good toss for Pakistan to win, Ibil, and great performance, great start. 2 wickets in the first, one in the second over. If I'm not wrong, they won all the tosses this tournament except for the USA game, and it's just that they've had luck in their favor to a large extent. Let's talk about the India game. They've had great luck to ball in those overcast conditions. I think if India would have balled, Pakistan would have been all out under 100. But having said that, Pakistan haven't really capitalized. That's been their issue. Can't really cry now that, oh, what ifs. I think yesterday Imad Wasim came out in the press conference and suggested that, as I know, Imad Wasim spoke like a leader, and he was like, "We were bad. We were bad throughout the phase." He pointed out the mistakes. That's what you want to see.
Babar Azam on the other end has been extremely casual, and I hope this is Babar Azam's last stint as a captain. जी बिल्कुल, बिकॉज मैंने भी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था मैं, एंड बाबर आजम को ऑलमोस्ट 6 या 7 मेजर टूर्नामेंट्स दे दिए गए हैं एज कैप्टन। Start. और आप अगर आपकी टीम को 7 टूर्नामेंट्स में से एक नहीं दे पा रहे तो दैट इज अ बिग कॉल। आपने और किंग कहा? सॉरी, आपने बाबर आजम को किंग के नाम से एड्रेस किया अभी? नहीं, आई डिडंट से द वर्ड किंग, बिल्कुल नहीं। नो, प्लीज, मतलब Oh, I think that's बिल्कुल हो another सकता है। wicket. I think that's very close. That was a Yorker length ball. I think that has hit the shoe first. I think that deserves to go for the referral. ओह, देयर वर टू नॉइसेस, पर शायद बॉल अंदर स्विंग हो रही थी और वहां पे That शाहीन reminded me of अफरीदी, the ball which Shaheen bowled to Rohit Sharma in 2021 World Cup. फ्लैशबैक्स। Yeah, that was close. That was very close. I'm sorry to say, but Babar Azam has lost respect in the team which he commands. बिल्कुल बिल्कुल And if सही you, कहा। जो हम कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम में जो कंट्रोल होता है, एज ए लीडर, एज ए कैप्टन, दैट यू ओन द ड्रेसिंग रूम, पर वहां पे ऐसा लग रहा है कि अलग अलग ड्रेसिंग रूम में अलग अलग लीडर्स हैं। बिकॉज देयर वाज एन इंस्टेंस जहां पे रिव्यू के लिए बाबर आजम को नहीं, मोहम्मद रिजवान को कोई देख रहा था और बाबर आजम कह रहे थे कि अरे भाई कैप्टन मैं हूँ, मुझे देखो। I think that's the review is on right now. I think the ball is एंड pitching outside the leg stump. इट लुक्स लाइक इट्स पिचिंग आउटसाइड लेग स्टंप। दैट्स अ गुड Yeah, कॉल बाय द अंपायर। very good और call. Very good call. दर्शाता है दोस्तों कि अंपायर्स को रियल टाइम में डिसीजन देखना पड़ता है। हमको तो स्लो मोशन में फ्रेम्स को कम करके, फ्रेम रेट कम करके दिख रहा है यहाँ पे, बट टू जी मेक दोस बिल्कुल। डिसीजंस रियल टाइम में इतने प्रेशर सिचुएशंस में अंपायर्स को क्रेडिट बहुत कम मिलता है, पर जब गलत डिसीजन देते हैं तो बहुत ज्यादा हेट मिलता है। I agree. And that was a good ball from Shaheen. That's also gone for four, if I'm not wrong. Has it gone for a boundary? No, I don't think it बिल्कुल has. बिल्कुल, लेग बाइज 4 रन सिग्नल कर दिया है, एंड पाकिस्तान मेरे हिसाब से हैव लॉस्ट बोथ देयर रिव्यूज इन द फर्स्ट 3 ओवर्स। I'm not surprised. And that's another single, very quick single from Curtis Camper, Shaheen Afridi running in. And I think one thing which Shaheen has done is to ball the attacking length really well. I mean, he's pulled his length a little slightly back. If you see the last over, it was slightly short, but this over he's gone more fuller. And he's trying to attack the stumps a lot more. He wants to get that dream Yorker length ball. I don't think you should do that. You should go back to that length which he bought in the first over. बिल्कुल, एंड अगर आप स्पीड्स पे भी ध्यान देंगे शाहीन अफरीदी के, तो ही इज ऑलमोस्ट टच 140, और हमें लगा था कि थोड़े अंडरकुक्ड आ रहे हैं ये वर्ल्ड कप में, बट वी फाइनली सीन कि मे बी शायद उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए था, थोड़ा रिदम चाहिए था, मे बी नीडेड सम गेम टाइम, सम एनर्जी बिटवीन हिज लेग्स। और यहाँ पे शाहीन अफरीदी बहुत अच्छे फॉर्म में, उनका रनअप अगर आप देखेंगे तो ही इज रनिंग विद पर्पस, रनिंग विद अ लॉट ऑफ एनर्जी। That's another good ball. Tried to drive here, Harry Tector, and missed it. They do not have reviews. They want to take another review, I hope. It was close again. But I think Ireland, one thing they're making mistakes again from the New York and from everywhere they played is they do not know which face to attack and which face to play out. Oh, जी that's बिल्कुल। out. That is out. Umpire hadn't given it out. That was out. It had ओह nicked माय it. गॉड, दे लॉ, और उन्होंने पिछले गेंद पे अपना रिव्यू खोया है। Oh my gosh. And that is again a very good ball pitching on the off stump coming in. Oh my god, that I did not expect that. But yeah, Pakistan will be slightly disappointed here. जी बिल्कुल, थोड़ा वो पिछले गेंद का जो रिव्यू था, और हम यही कहते हैं अक्सर दोस्तों कि बॉलर होना, आपको हर बॉल आउट लगता है। तो वहां पे शायद बाबर आजम ने बॉलर का सुना, लाइक चलो ठीक है ले लेता हूं मैं। एंड मैं रिजवान की बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि मोहम्मद रिजवान हर स्टूपिड से स्टूपिड चीज के लिए अपील Yeah, करते हैं, डिसमिसल होता है, कभी अपील I agree. नहीं करें। And I'm not surprised. Even the last game, oh, that's another shout and that's a wicket. Harry Tector is gone, but I think Tector might just review this. That's a very good ball, Yorker length, but Tector might just review this because just to see if the ball is going down the leg side.
जी, पर शायद से अंपायर्स कॉल उन्हें विकेट दे Oh, देगा he's not क्योंकि reviewing it. He's leaving the crease. That means it's a fourth wicket down for 15 runs here, and Pakistan are all over Ireland here. जी बिल्कुल 4 विकेट दोस्तों, 4 विकेट। क्या आप और मैंने सोचा था कि 4 विकेट हो जाएंगे? मैंने सोचा था कि शायद बाउंड्री की बरसात हो जाएगी, 4 बाउंड्रीज आ जाएंगे, पाकिस्तान फिर से प्रेशर में आएगा। और लगता है कि आयरलैंड मिस्ड अ चांस, क्योंकि ये रिव्यू अगर हम लिया होता, क्लोज लग रहा है ये उनके बैक हील को लगा है। पर हैरी टेक्टर अ वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं दोस्तों आयरलैंड क्रिकेट के, बहुत टैलेंटेड है, पर ये वर्ल्ड कप में कोई फॉर्म नहीं चला उनका। अनफॉर्चुनेटली डक Yeah, आउट। unfortunately, I expected him and Locke and Tucker to come good this World Cup. I had a lot of hopes in Ireland because I expected Ireland to do what USA was doing this World Cup. But yeah, fortunately, unfortunately, I just have a feeling that nothing has really gone their way. Nothing has really gone their way. Batting, bowling, nothing has gone in their way. I just feel like they were just undercooked the moment they came to the World Cup. They just felt like the pressure or whatever. Nothing has gone their way. बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कम्पीट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि प्रोसीडिंग्स बस चल रही है, दे आर हियर टू प्ले, एक मैच खेलने आए हैं, दूसरा मैच खेलने आए हैं। Yeah, they got tough conditions. Yeah, I agree. New York में पहले game में it was very tough against India. You had a Bumrah and Arshdeep really ruling over you and Siraj really dominating you. Second game against Canada, chasing 140 in New York was a big deal. It was never easy for any team. And then after that, again, that was pretty close, wasn't it? Amir bowling. I just feel they've lost reviews at the wrong time. जी, But these बिल्कुल। were closer. पर उम्मीद ये होगी कि अभी जो भी अपील रहे या निक्स रहे, अंपायर दे देंगे आउट। Oh, again, that was pitched outside the leg stump, was it? Yes, it was. Oh my gosh. Did not take a review for that. कुदरत का निज़ाम। एक रिव्यू, Uh, एक पिछले बॉल पे can you विकेट। believe it? In the same over, two bad decisions, and one was not given out, one was given out. Both could have been एंड avoided. एक और बैड डिसीजन कर्टिस कैम्फर का, अगेन लुकिंग टू प्ले अ शॉट दैट इज नॉट ऑन एट ऑल। I think Ireland are in a hurry to reach Dublin by tonight. जी बिल्कुल सही कहा, लग रहा है कि उनको पाकिस्तान को मैच प्रैक्टिस देना ही नहीं है कि नहीं भाई तुम खेलो ही मत, हमें भी कुछ खेलना नहीं है। ओह, येट Oh, another अनदर good ग्रेट ball. डिलीवरी। ये दोनों पाकिस्तानी के लेफ्ट आर्म पेसर्स बहुत तंग कर रहे हैं आयरलैंड के बैटर्स को। 3 साढ़े 3 ओवर हो चुके हैं दोस्तों, 4 विकेट चले गए और अभी भी सिर्फ 15 रन। और हमने उम्मीद किया था कि फ्लोरिडा के इस पिच पे जो हाई स्कोरिंग रहा है एज कम्पेयर टू न्यूयॉर्क के जो पिचेस हमने देखे हैं, बट यहाँ पे द ओनली हाई स्कोर इज ऑफ द विकेट टैली। Yeah, I agree. Amir running in again, and ball is pitched out on the middle stump and tries to play a heave. Harris is behind the ball here. I think they'll get comfortably too. That's exactly what they would want here. Get some runs. I know what they're trying to do. They're trying to make the most out of the power play. But 4 wickets down, 17. They're playing fire with fire. But at this point, they're just getting burnt. जी बिल्कुल सही कहा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब आयरलैंड आपको पावर प्ले के हिसाब से नहीं, आपको 20 ओवर खेलने के हिसाब से अपने सारे स्ट्रेटजीज बनाने पड़ेंगे। यू नीड के जब 15वां ओवर आए कि यही दोनों बल्लेबाज क्रीज पर रहे, क्योंकि इसके बाद तो बैटिंग खत्म ही है उनकी। And Amir जॉर्ज is डेलनी running in टू कम, again. गैरेट डेलनी That's टू कम। another. I think one thing what Curtis Camphor is trying to do is to put pressure on Amir particularly, which I don't understand. This is not the time to put pressure. Maybe they could have targeted a Shadab Khan or a Imad Wasim or, even for the matter, even a Harris Roth. These guys don't swing the ball as much. Here, Amir and Shaheen was going to swing the ball. जी सही कहा आपने। एंड अटैक और डिफेंस के बीच में वही बैलेंस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी प्लेयर, और आयरलैंड स्ट्रगल कर रहा है उस अटैक और डिफेंस के बैलेंस को ढूंढने में। Oh, he's trying to scoop him here, Amir.
but misses it. 17 for 4 at the end of 4 overs. I really wonder. I'm just baffled with this batting approach, but yeah. जी बिल्कुल, क्योंकि जब नहीं चलता है तो ये अप्रोच बहुत सरप्राइजिंग और कंफ्यूजिंग लगता है, पर जब चल जाता है तो ये अप्रोच सबको बहुत पसंद आता है। देखते हैं कि कर्टिस कैम्पर क्या यही अप्रोच अगले ओवर में भी शाहीन अफरीदी व्हाट डू यू थिंक एबल के क्या दोनों लेफ्ट आर्म पेसर्स को एक और ओवर देना चाहिए एंड फिनिश द पावर प्ले विद लेफ्ट आर्म पेस इटसेल्फ? Uh, I think so. They have to give Shaheen one more over, and let's just see. Because if you give Shaheen one more over here, I think it's a rain which is coming in from the southern end. Is it raining though? I think there is a high chance of the weather just getting a little bad here. जी और आ गए शाहीन शाह अफरीदी फिर से और रनअप अगर आप देखेंगे दोस्तों अब स्पीड थोड़े कम हो गए बिकॉज इट्स द थर्ड ओवर ऑफ हिज स्पेल और यही बात है शाहीन शाह अफरीदी की कि इनके फिटनेस स्टैंडर्ड्स गिर चुके हैं और इनके परफॉर्मेंस पे बहुत चोट I पहुंची think है कि Pakistan, the fitness standards in general is very awful. Just जी looking at Babar Azam, if you want to be Virat Kohli, you can't look like that. But yeah, Shaheen runs in here for the second ball of the over. Yorker length hits it to the short cover here. Yeah, coming back to the point again, I just feel Pakistan, yeah, they did army training and so and so, but come on. I'm sorry to say that fitness has not improved a tad bit. I don't know if it was more like a PR stunt than they actually trained. ये इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड द साइकी और क्या कर रहे थे वो मे बी सोच अच्छा था अप्रोच अच्छा था पर जो फ्रूट और जो रिजल्ट पाना था उन्हें कुछ मिला नहीं एंड एक और चीज मैं देख रहा था कि पाकिस्तान ने इमाद वसीम, सयम आयूब, मोहम्मद आमिर इन सब प्लेयर्स को सिलेक्ट किया था अपने सीपीएल एक्सपीरियंस के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली इस टीम के लिए कि वो यूएसए के लेग से ही खत्म हो गए और वेस्ट इंडीज लेग पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो सीपीएल एक्सपीरियंस किस काम का जब अगर आपके कैप्टन और मैनेजमेंट के पास इतने मतलब इंपॉर्टेंट क्रंच मोमेंट्स में परफॉर्मेंस नहीं है तो जी परप्लेक्सिंग बिल्कुल पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट का वो बहुत फेमस लाइन है नासिर हुसैन का पाकिस्तान क्रिकेट 1 minute डाउन नेक्स्ट मिनट अप व्हिच आई डोंट थिंक आई एवर फॉरगेट बिकॉज़ आई थिंक इट परफेक्टली डिस्क्राइब्स Shaheen व्हाट Afridi ball that hit over the covers here by George Dockrell, and that's the first boundary of the bat of George Dockrell, and that's 22 at the end of 4.4 overs. That was a very good shot. That was the right ball to be punished, but yeah, he chose the right ball. बिल्कुल शाहीन अफरीदी में भी गेटिंग अ लिटिल ग्रीडी अपने आखिरी ओवर में है इस स्पेल के और But थोड़ा again, yeah, he got a wicket last over, but his first over was much better than the last 2 overs he's bowled. जी बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा लालची हो रहा है बॉल को बहुत आगे डाल रहे हैं और स्विंग जरूर मिल रहा है उनको पर वो स्विंग बैटर के ज्यादा काम आ रही है बॉलर के नहीं एंड लेट्स सी नाउ हाउ ही रन्स अप क्या उनकी Yeah. एनर्जी रहती है रन अप पे चार्जिंग टुवर्ड्स द बैटर येट अगेन शाहीन अफरीदी एक और बार Let's hit through the covers once again. Brilliant shot here from George Rockwell. Two back-to-back boundaries here. And as you mentioned, Alan, Shaheen is looking a little tired. जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा एबल एंड ये आउटफील्ड देख के बहुत अच्छा लग रहा है जैसे कि हर्षा भोगले भी कह रहे हैं कि आउटफील्ड फास्ट है न्यूयॉर्क का हमने देखा था कि द सैंड लेड जो आउटफील्ड थी वहां पे बॉल बाउंड्री के पास जाना ही नहीं चाहता था बट ये एनकरेजिंग साइंस है और अगर हमें कल क्रिकेट देखने मिलता तो क्या क्या पता क्या हाल होता कनाडा के बल्ले गेंदबाजों का ऑन दिस पिच। I agree. I think once again, Shaheen Afridi coming around the wicket here. Ball's full, and George Rockwell hits it down the ground. And this could be another. Oh no! Just saves it right before the boundary. In today's game, is there Abbas Afridi playing in today's game? आई डोंट थिंक अब्बास हाफिज इज प्लेइंग एक बार मैं स्क्वाड चेक कर लेता हूँ पर लाइक आई सेड के नसीम शाह के जगह पे उन्होंने बस अबरार अहमद को लिया था अपने टीम में। Okay, Abbas Afridi is playing, by the way. Oh, Abbas Afridi is playing. Okay, Abbas so Afridi is playing, and it's it's not I only don't think Abbas there is Afridi, Abrar Ahmed. Abrar Ahmed नहीं है। It was Abbas Afridi who's playing. Yeah. Yes, yes, yes. It's Abbas. So they've gone with pace, pace, pace.
They wanted to give another youngster a chance, पर मैं मानता यही यही बात होती है पाकिस्तान क्रिकेट की। मुझे समझ नहीं आता कि ये किस हिसाब से अपनी टीम सिलेक्शन करते हैं। ऑब्वियसली नसीम शाह इज अ मच बेटर बॉलर देन हारिस रऊफ। हमने देखा है कि जिस बॉलर के पास ये रिकॉर्ड है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में जितने रन पाकिस्तान के बैटर्स ने नहीं मारे उतने उनके बॉलर ने दिए हैं हारिस रऊफ ने। तो I मैं agree. समझ नहीं आता मुझे कि हारिस रऊफ Mohammad बैटिंग Amir. ऑर्डर में नसीम शाह से ऊपर कैसे है। पर Absolutely. पेस इज पेस यार, एंड दैट्स व्हाट पाकिस्तान's फॉर्मूला हैज बीन। I agree. Mohammad Amir's ball his first ball of the fifth, sixth over, and that was a good ball and well played from Curtis Camper. He's kept his composure a little bit. Now, if you look, 5.1 overs, 28 for 1 would have been a better score than 28 for 4. जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि Because if you जिस look now, the swing has gone and the batting has become much better. It's just that they just lost a lot of wickets up front. But from here again, T20 game, we've seen some recoveries happen, crazy things happen. I'm expecting them to score 150 at least to stay in contest. जी बिकॉज इनके पास भी, आयरलैंड के पास भी टैलेंटेड बॉलर्स है। जो अटैक फास्ट बॉलर्स में जोशुआ लिटिल, जो शायद फॉर्म में नहीं रहे इस वर्ल्ड कप में अभी तक, पर पूरे तरीके से एबिलिटी है उनके पास इन कंडीशंस को एक्सट्रैक्ट करने का। एंड जी बिल्कुल, होपफुली 150 के आसपास अगर आयरलैंड पहुंच जाती है तो वी माइट सी गेम। Yeah, that's a bouncer ball by Mohammad Amir. George will try to pull it, but it was above his head. That's one bouncer for the over. Now, 28 odd runs at the end of power play. I just feel maybe Ireland should feel a little bit comfortable. Just take the game to 11th over, 12th over, then up the run rate from there on. Just play it out, just take those doubles, play at a 6, 7 run rate, 80, 85 odd at the end of 12 overs. That's not a bad. Oh, that's up in the air, and Amir takes it. That was such a dolly. Stuck in the wicket there, and George Docker was beaten for pace there. He expected the ball to come a little more faster, but the ball held on the wicket. There's 28 for 5 here. As I was just mentioning about a partnership, and the partnership was broken here. जी बिल्कुल, और आमिर येट अगेन शोइंग हिज क्लास दोस्तों, बता रहे हैं कि क्यों एक्सपीरियंस काम आता है और कितना एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट अ डिलीवरी चेंज किया वहां पे। डॉकरी को कोई आइडिया नहीं था, वाज एक्सपेक्टिंग पेस ऑन द बॉल, और फॉक्स कर दिया उनको, और निराश चेहरा वहां डॉकरिल का। एंड आमिर सेलिब्रेट्स द विकेट। और यही है पाकिस्तान क्रिकेट दोस्तों, कि आपको पता नहीं है किस दिन पे कौन सा पाकिस्तान खेलने आएगा। See, genuinely speaking, they have a terrific bowling attack. If you look at this tournament, they have all the goods to really make a very good bowling attack, very good match out of any game. Because that's the bowling attack they have. Against USA, they pulled that game back with their bowling. With India, they got India all for 120. I'm not talking about the Canada game, but yeah, that's what it is. Against any opposition, they have the bowling attack to really do well. But it's the batting who has not really stepped up for them. And the fielding, of course. जी बिल्कुल, पाकिस्तान की बैटिंग और पाकिस्तान की फील्डिंग और पाकिस्तान की कैप्टनसी एंड जस्ट एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ द क्रिकेट, मतलब क्रिकेट के अलावा बहुत सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में जो उन्हें फिक्स करनी होगी। एंड बॉलिंग टैलेंट, जैसे एबल आपने कहा कि पाकिस्तान के पास भर भर के पड़ा है, बट बैटिंग टैलेंट, जस्ट लाइक इमाद वसीम ने कहा कि वी हैव नॉट प्लेड टी20 क्रिकेट लाइक इट शुड बी। हम अगर आगे नहीं बढ़े हम तो पीछे चले गए। I agree. I'm not surprised. And that's where they are right now. They are having a group stage exit. That's a very good shot from Delaney. First ball, slashes it for four through the point. That's a boundary to start off. जी, गैरेट डिलेनी दोस्तों एक अगेन बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। लेफ्ट आर्म स्पिन भी डालते हैं अपनी टीम के लिए, और बैट भी अच्छा मारते हैं बैट से। इट्स नॉट लाइक कि वो मग है। अगर आप नंबर 5 पे आ रहे हो तो अगर आप यही शॉट देखेंगे तो बहुत अथॉरिटी से खिला ये शॉट। Yeah, he batted with authority and he really showed what he can do as well. So, excellent shot from Garrett Delaney here, and he'd be very happy. जी, और आखिरी बॉल डॉट बॉल, और इसी के साथ पावर प्ले होता है खत्म। एंड
दोस्तों, आधी टीम आयरलैंड की पवेलियन वापस पहुंच चुकी है और स्कोर 32 हो गया है। रन बॉल से ही नीचे है इनका स्कोर। आयरलैंड के पास बहुत अभी कम बल्लेबाज, बहुत कम नहीं, बस यही दो बल्लेबाज बाकी है, क्योंकि इसके बाद तो उनका टेल आएगा और टेल एक्सपोज होगा। मार्क अडेर भी खेल सकते हैं। पिछले मैच में मार्क अडेर ने ही रन मारे थे उनके लिए, लोअर डाउन दी ऑर्डर। तो बैट पकड़ना जानते हैं, पर यू कैन नॉट रिलाई ऑन मार्क अडेर एवरी टाइम। I agree. I mean, obviously, this is a big loss. If you lose a couple of wickets more here, they could be bundled out less than 100. That's going to be even more cheaper. So, Ireland, I think, are in deep trouble. Now, Harris Roth is here to ball after power play. I would love to see how Curtis Camphor approaches this now. Ooh, that's a loose ball by Harris Roth, but Curtis Camphor couldn't connect it. I think here for Pakistan as well, they would want to really get them all out as soon as possible. Because as a team, more runs they score, yeah, obviously, I still believe they would chase anything below 150 down. But just to be ruthless here is so important for Pakistan. And that's very close here. जी, यही पेस है, यही पेस की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। आप देखेंगे तो 134 पे ही डाल रहे हैं, 134, 135। पर जो उनके एक्शन का स्किडी नेचर है, जो वो कस के पकड़ के डालते हैं लेंथ पे, यहाँ पे बहुत क्रूशियल होगा हारिस रॉफ का। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि बिल्कुल जी अच्छे बॉलर है, पर मेरे हिसाब से अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो मैं नसीम शाह को प्रेफर करते, क्योंकि नसीम शाह वो जो चैनल पे ऑपरेट करते हैं ना, वो बहुत अनकंफर्टेबल चैनल है, अनसर्टेनिटी, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी जिसे हम कहते हैं। और हवा में गेंद, क्या ये ड्रॉप होगा? जी ड्रॉप नहीं, बहुत कंफर्टेबली कैच पकड़ा है ये दोस्तों। और 6th विकेट डाउन फॉर आयरलैंड। Yeah, कैन यू बिलीव दोस्तों? कर्टिस कैम्फर भी बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, पर बहुत आसान सा कैच दे दिया। और पाकिस्तान के फैंस, पाकिस्तान के प्लेयर्स और सारे पाकिस्तानी फैंस बैक होम, समथिंग टू स्माइल अबाउट, समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट। exactly. And I think this, I was just making a point, before it's lost the connection for chat bit. I just feel that how will Pakistan approach this? That was the most interesting thing to see. I think Pakistan are still being ruthless, which is good to see. And Ireland are just falling apart. Like, they couldn't disappoint me anymore in this tournament. जी बिल्कुल, आयरलैंड जिससे बहुत उम्मीद उम्मीद थी सभी को, वो उम्मीदों पे तो नहीं खरे उठे। आयरलैंड अनफॉर्चुनेटली निराश होंगे, एंड देयर विल बी सम क्वेश्चंस आस्क्ड। और लगता है कि बहुत सीनियर प्लेयर्स का आयरलैंड की टीम में टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक 2026 का वर्ल्ड कप आएगा इंडिया में, तब तक आई एम प्रीटी श्योर आयरलैंड का जो टीम है नया लुक होगा। Also, Ireland, that there's certain players who have really not made any sense to me. Like Balburney, I think is a misfit in this team. And Paul Sterling, he's not performed in any of these ICC tournaments, which is played in the recent past. Yeah, he's a big player. The tag of big player is there, but he's not really stepped up. So yeah, we've been giving them the leeway, right? Yeah, they're underdogs, so and so, but it's about time you step up. जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिकॉज इफ यू वांट टू विन गेम्स, अगर आपको मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में मैचेस जीतने हैं और आपको compete करना है मल्टी नेशनल नेशन टूर्नामेंट जीतने का, तो आपको रूथलेस डिसीजंस लेने होंगे। एंड बोथ दीज टीम्स, मैं कहूंगा कि रूथलेस डिसीजंस नहीं ले पा रहे, ब्रेव कॉल्स नहीं ले पा रहे अपनी टीम के बेस्ट के लिए। और इसीलिए भुगत रहे हैं दोनों टीम्स आउट ऑफ कंटेंशन फॉर द सुपर एट्स। Yeah, exactly. I mean, it is a battle for the wooden spoon here today, but it just shows one team was Ireland. Like, a lot of people were like, "Oh, Ireland would have defeated USA." Do you really think so? I don't think so. USA would have ran riot over them, in my opinion. बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज यूएसए की टीम ने दर्शाया है अपने प्लेइंग स्टाइल से, अपने बॉडी लैंग्वेज से,
अपने एग्जीक्यूशन से, अपने प्लान से कि दे आर नॉट हियर टू जस्ट प्ले, दे आर हियर टू कम्पीट एंड दे आर हियर टू विन। और वो माइंडसेट अगर आप लेके चलोगे तो हमने देखा है कि क्या नतीजा होता है। सुपर एट्स में किसी ने सोचा होगा कि यूएसए प्लेइंग देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप सुपर एट्स में compete करेगा और दे गेट टू रब शोल्डर्स विद चैंपियन टीम्स लाइक वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड एंड साउथ Yeah. अफ्रीका। तो मैं बहुत खुश हूँ यूएसए के परफॉर्मेंसेस से। एंड अगेन आई एम प्रेटी श्योर कि जो आईसीसी का वो एजेंडा था कि हम क्रिकेट को यूएसए में लेके आए, वो And कामयाब I तो think जरूर होगा क्योंकि once I'll वो tell you एक one बहुत interesting thing about it, Alan, about US sports. Once you give them infrastructure, they're going to build on it. They've always made sports. They've taken up sports. Let it be basketball, let it be MLB, NFL, even now football, soccer as they call it. It's just growing in a very good manner. When you talk about individual sports, you know how good they are. They have always been there. So when it comes to sports and investments, once America gets hold of it, they're really going to make the most out of it. So if cricket, if they and now after this World Cup, especially, the big boys are going to take a look at it. Oh wow, we can really make a lot of money out of this. यस। If that happens, then good luck, world. I think they are going to be a superpower in cricket soon. जी, और अब्बास अफरीदी अपने पहले ओवर के लिए आए हैं इस मैच में दोस्तों, और देखते हैं कि ये यंग बॉलर कैसे परफॉर्म करेगा। अगेन एक और फास्ट बॉलिंग टैलेंट पाकिस्तान क्रिकेट से निकल के आ रहा है, पर बैटिंग टैलेंट हमें पाकिस्तान क्रिकेट से देखने ही नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि दोस्ती यारी 11 खेल लेती है Okay, I have a इनका। question for you, Alan. If Babar Azam was in India, would he have made to the T20 World Cup squad? जी बिल्कुल नहीं। अगर शुभमन गिल जितने टैलेंटेड प्लेयर बाहर बैठ सकते हैं और अब घर जा रहे हैं, हमने रिपोर्ट देखा है कि जो रिजर्व्स है उसमें से घर भेज रहे No, हैं no, no. दोनों को। Shubman Gill has put that to rubbish today with that story with it, Rohit Sharma. So No, but I think they are sending reserves back because they don't want yeah, they're saying too many reserves reserves. back, but the discipline issue one is या डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिनरी इशू तो बस मीडिया के अफवाहें थे और रूमर्स और ये अनवांटेड खबरें थे। बट जी, yeah. टू आंसर योर क्वेश्चन कि शुभमन गिल जैसे टैलेंटेड प्लेयर अगर हम हमारी प्लेइंग 11 तो छोड़ो, मेन स्क्वाड में नहीं रखा है हमने, तो बाबर आजम अगर यहाँ पे होते या कहीं और होते तो टीम के बाहर ही बैठते एंड ही वुड हैव बीन स्ट्रगलिंग टू मे बी इवन मेक द सिलेक्टर्स लुक एट हिम फॉर दिस फॉर्मेट। I don't think for any format he will be there in the Indian team. जी, और यहाँ पे क्या रन आउट हुए हैं? नहीं, अपना बैट नीचे डाल दिया है और पैर भी डाल दिया है। फॉर्चुनेट, माफी चाहता हूँ, फॉर्चुनेट वहां पे किस्मत उनके साथ थी। I think I would put Babar Azam in the category of an Aiden Markram or a KL Rahul, that kind of pedigree. I think that's big disrespect to KL Rahul and Aiden Markram as well because Aiden Markram ने अपनी टीम को अंडर 19 जिताया है, ऐसे 20 में 2 टाइटल्स जिताए हैं। केएल राहुल ने इंडिया को इनन्यूमरेबल मैचेस जिताए हैं एंड ही हैज प्लेड एन नंबर ऑफ मेमोरेबल नॉक्स जो बाबर आजम के पास नहीं है। बाबर आजम के पास सिर्फ पीआर है और sorry to say, but he has a great record against nations that don't have too much experience playing cricket. एंड अगर आप बड़ी टीम्स के अगेंस्ट बड़े मैचेस में, बड़े टूर्नामेंट्स में इनका रिकॉर्ड देखेंगे तो मुझे सिर्फ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2019 वर्ल्ड कप में उनका वो सेंचुरी याद आता है जो उन्होंने Yeah, खेला लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। उसके अलावा लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में आई डू नॉट रिमेंबर बाबर आजम मेकिंग अ हैंडी कंट्रीब्यूशन टू हिज टीम। interesting. I mean, I'm just looking at his stats here, and you're right. You're right. I mean, there's nothing which he has done which has been out of this world. एग्जैक्टली माय पॉइंट बिकॉज ये दो प्लेयर्स के पास हमें पता है कि at some level they've lived up to the promise of their talent. Maybe KL Rahul has so much talent कि उम्मीद इतने है उस प्लेयर से कि he's not able to live up to that. But बाबर आजम मैं कहूंगा कि is maybe not even 1/4 of the player that Aiden Markram and KL Rahul are. Big calls, but yeah, I'd agree. जी, और जो शायद हमें देखना चाहिए था दोस्तों आयरलैंड से, अ पीरियड ऑफ क्वाइट, अ पीरियड जहां पे विकेट्स पे थोड़ा कंट्रोल किया है उन्होंने, इवन इफ इट्स जस्ट फॉर 6 to 7 balls,
वो बॉल्स ही इतने कम हुए हैं कि ऑलमोस्ट हर ओवर में एक विकेट आया है। और And 8 here के बाद अभी भी उनका स्कोर सिर्फ 40 रन। अगर यही हाल चलता tries रहा to तो pull फिर this. It's in the gap, and we'll not get a four here. Yeah, that's a eventful over for Ireland. Scored seven of that over. So 41 for six at the end of 8 overs for Ireland. Abbas Afridi did not really look threatening at all throughout that over. जी बिल्कुल, लगता है कि वार्म अप ओवर लगा था, ऐसा लग रहा था कि वार्म अप ओवर था अब्बास अफरीदी का। आस्क नो क्वेश्चंस। और देखते हैं कि कितनी देर तक ये सरवाइव करते हैं ये पैर, क्योंकि ये लास्ट रिकग्नाइज्ड बैटिंग पैर है आयरलैंड के लिए। I'm pretty interested to see as to what Ireland does from here as well, because six down, 12 overs still remaining in the game. Can they battle it out, or am I expecting Pakistan to just run through them, which is quite possible as well. Pakistan can just run through them, but again, Harris Rauf and Abbas Afridi are not looking that threatening like Amir and Shaheen. जी बिल्कुल, और मैं इनसे कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ भी Oh, एक्सपेक्ट नहीं that's करता। taken. Oh no, was in the air, straight down the ground. ओह, दैट वाज अ चांस, पर ये बहुत मुश्किल चांस होता है। लग भी गया है हारिस रॉफ को जोर से अपने नी पे। Yeah, that was a tough chance, but yeah, will be hurting him a lot. That came pretty quickly. Can't do much. जी बिल्कुल, बहुत गलत जगह पे लगा है उनके पैर पे। बहुत जोर से मारा था और जोर से डालते भी है हारिस रॉफ। अगर आप उनका रन अप देखते हैं तो जितनी जोर से डाला था उतनी डबल जोर से वापस आया उन पे। I agree, and I think that's where someone like Harris Rauf will be feeling the pain now. I hope he's okay. I hope he can continue bowling well as well. Pakistan will need him, especially to blow off the stage, because in Ireland almost everybody can bat and hold their bat a little bit. So it isn't going to be that easy to dismiss that team as you think, but then you've been doing a good job. Just keep doing it. Because you don't want Ireland to bat out 20 overs. Just want to blow them off from here. जी बिल्कुल, अगर आपने पहले 6 ओवर में 5 विकेट लिए हैं तो आप एज़ अ बॉलिंग टीम तो आप थॉट तो लेके ही चलते हैं कि 20 ओवर के पहले तो ये इस टीम को ऑल आउट करना ही करना है। अगर नहीं किया, तो मैं मानता हूँ कि आयरलैंड की रिकवरी होगी इन स्पाइट अगर उन्होंने कम टोटल दिया स्कोर किया तो। क्योंकि Yeah. अगर आपने गेम शुरू किया है तो आपको फिनिश भी करना बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट हाफ जॉब डन इज़ नॉट जॉब डन एट ऑल। So I think you can give Amir this full quota of 4 overs. Just ball him out and let's just see. Ball Shine and Amir out. जी, और You're giving आप them a brief period of rest. Just ball them out. They get a couple of wickets here. The game is done and dusted. बिल्कुल, और अभी तक स्पिन भी देखने नहीं मिला है हमको कि इंट्रोड्यूस हुआ है। और मोस्टली नहीं, आई एम वेरी श्योर कि कंडीशंस जो ऑन प्ले है उसका बहुत बड़ा हाथ है इस डिसीजन में कि ओवरकास्ट कंडीशंस है, पेसर्स को असिस्टेंस मिल रही है, तो जितना हम अटैक कर सकते हैं, पेसर्स को असिस्टेंस दे सकते हैं, वो यूज करेंगे। एंड देखते हैं कि आफ्टर दिस ब्रीफ स्टॉप इन प्ले क्या होता है जवाब हारिस रॉफ का। The conditions have gotten really dark over there. I don't know if you're expecting any rain around. ओह यस, बिल्कुल। Well, that's up in the air, and I think that's going to go all the way here. Excellent shot from Delaney, and he smashed it for six. दैट्स अ ग्रेट शॉट। बहुत सही और करारा आवाज आया बैट से जब वो बॉल कनेक्ट हुई, और 6 रन। एंड आई थिंक ये पहला छक्का है इस मैच का। Excellent shot here from Delaney. He just looked like he was going to clear it. He had no doubts about it at all. Terrific shot. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स इनका है ये टेक्निक, बट
इफेक्टिव है और आपको बस यही चाहिए होता है कि जितना अनऑर्थोडॉक्स है, जितना मैं कहूंगा टेक्निकली आप टेक्स्ट बुक क्रिकेट नहीं खेलते, वो मैटर नहीं करता है, बस आपका इफेक्टिविटी मैटर करता है। ऋषभ पंत Yeah. इज द बेस्ट एग्जांपल। I think here, Ireland, you've seen Delaney play well even against India, if I'm not wrong. He's got that gutsiness in him, just to battle it out, especially when his team is down and out. So Pakistan, yeah, they're still the favorites to win this, but you don't want this game stretching out too much from a Pakistan POV. अग्रीड अग्रीड अग्रीड। और अब दिखा रहे हैं दोस्तों मोस्ट विकेट्स अब तक वर्ल्ड कप में किसने लिया, और सबसे ऊपर है फजल हक फारूकी एबल हु हैज टेकन द वर्ल्ड कप बाय स्टॉर्म। क्या टीम बनी है ये अफगानिस्तान टीम, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम अ लिटिल स्कैर्ड फॉर इंडिया। I mean, we all should be worried of Australia, is what they say, but then I feel Afghanistan is going to be an equally tough challenge because Fazlak Faruqi with the form he is in. But the good part is India will be playing them on a daytime in Barbados, which has been a better pitch in this tournament. So it won't spin as much and it won't swing as much. So it's good for India to play Afghanistan on a day game in Barbados. जी बिल्कुल, एंड दिस सुपर 8 इज गोइंग टू बी समथिंग टू वॉच आउट फॉर। I mean, now is where the World Cup begins. बिल्कुल, एंड That's आई एम up in the रियली पम्प्ड air, अप। one bounce and goes to Armour in the third man region. Yeah, ओह, Delaney is just playing the way he wants to play. He's not looking to rotate strike here. He's not looking to play anybody out. जी लगता है कि आयरलैंड के डगआउट से मैसेज आ चुका है कि यू हिट आउट और यू गेट आउट, एंड दे आर गोइंग टू प्ले फायर विद फायर। Which is also interesting to see. You're gonna get as many runs as possible here. बिल्कुल, इट मेक्स फॉर किड्स डूइंग गेम को एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग बनाता है। एज अ व्यूअर आपको देखने में और मजा आएगा। I think what Harrisov should do is to do a change of pace of some sort. Because the wicket is holding a little bit from what I saw from Armour when he bowled that slower ball to George Dockrell. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हारिस रॉफ नीड्स टू मेक यूज ऑफ हिज पेस एंड चेंज ऑफ जो वेरिएशन लेके आ सकते हैं। आमिर के पास बहुत एक्सपीरियंस है, परहैप्स द बेस्ट बॉलर इस पूरे टूर्नामेंट में, बारिंग वो जो बहुत खराब सुपर ओवर डाला था उन्होंने, जिसमें वाइड्स गिरे थे, और इट्स जस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट। Yeah, agreed. पर 9 And I ओवर think के over here as well, almost halfway into the game, almost 10 overs are bowled. What Ireland can do is, you know, make Delaney hit and let Alde just rotate strike. बिल्कुल बिल्कुल। पर अगर टेलेंटी का हम लोग अप्रोच देख रहे हैं, जो पता चल रहा है, तो वहां पे कोई सिंगल डबल नहीं, वो शायद डबल बाउंड्री या डबल छक्के मारने के पीछे लगे हुए हैं। Would be interested to see how they play spin here. Well, that's up in the air, and I think that he's cleared the boundary for 6 here, Delaney. दैट्स अ स्मैशिंग शॉट यार, और शादाब खान का वक्त तो बहुत ही बुरा चल रहा है, एंड आई डोंट नो मतलब कि क्या किस टाइप के बॉलर है ये, समझ नहीं आता है। बैटिंग बहुत सही करते हैं, बल्लेबाजी बहुत सही करते हैं, बट बॉलिंग में ही इज जस्ट नेवर बीन अ बॉलर। एक बहुत छोटा फेज था जहां पे यंग शादाब खान विकेट टेकिंग एबिलिटी था उनके पास, पर नथिंग टू शो फॉर हिमसेल्फ नाउ। I think Shadab Khan focused a lot on batting that he compromised on bowling. जी बिल्कुल। पर यहाँ पे सेकंड डिलीवरी पे थोड़ा सा टर्न मिला, लाइन और लेंथ को करेक्ट किया आपने, एंड यही कंसिस्टेंसी नहीं है शादाब खान के पास, बिकॉज मुझे याद है शादाब खान की बहुत बुरी आदत है कि वो फुल टॉस दे बैटर्स को, और रोहित शर्मा के वो लंबे छक्के मिड विकेट की बाउंड्री के ऊपर अभी भी याद है मुझे कि फुल टॉस डालते हैं शादाब खान और रोहित शर्मा बस खड़े खड़े 6 रन ओवर द मिड विकेट रीजन। Yeah, I agree. I think that's been Shadab Khan's biggest issue in the last few years. That he's been all over the place, no consistency, very erratic. And he's supposed to be a wicket taking bowler, but he's nothing been a bowler.
But again, short of the length, missed out on an opportunity to hit him away. जी बिल्कुल, अगेन दिस वाज नॉट अ वेरी गुड लेंथ। अगर यहाँ पे मिडिल कर लिया होता तो छक्का या चौका जरूर जाता। और यही जैसे कि हम कह रहे थे कि कंसिस्टेंसी नहीं है लेग स्पिनर में। आप को कंसिस्टेंटली एक ही लाइन और लेंथ पकड़ के वो हिट करना पड़ेगा और बैटर को फोर्स करना पड़ेगा आपको खेलने के लिए। But yeah, there's और a nice little partnership which has been built by Alder and Delaney. They'd want to continue this. बिल्कुल मैच्योर इनिंग्स दोनों की अभी तक रही है। चांसेस भी लिए हैं और चांसेस में Again, short of the length, and Alder pulls it. And he stay. Oh, he's gone over the top. I think that's 6 runs. Poor bowling from Shadab Khan here. जी लगता है कि कैच ड्रॉप हुआ है। पाकिस्तान That was Harris off there. That was a tough take. If you look at the replay, you can see Harris off never had it. So it was one bounce and four. So Shadab Khan has gone for more than 10 runs this over. And that's the जी end of बट the over. येट अगेन आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के फील्डिंग स्टैंडर्ड्स इतने लो है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। बट इफ दिस वाज एन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इंग्लैंड और इवन फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट यूएसए जिनकी फील्डिंग बहुत सही रही है इस टूर्नामेंट में, तो वो कैच पकड़ लेते या निराश होते कैच ना पकड़ने से। यहाँ पे हारिस रॉफ के शक्ल पे कोई निराशा नहीं। ही जस्ट श्रग्ड इट ऑफ के यार एटलीस्ट आई ट्राइड। एंड दैट इज द डिफरेंस मुझे लगता है दोस्तों के टीम और चैंपियन टीम में। क्योंकि पाकिस्तान खेलती तो है पर ऐसा लगता है कि वो बस खेलने के लिए खेलती है, कभी कभी जीतने के लिए नहीं खेलती है। यू सी द पैनिक, यू सी द हारा कि यू सी उनके चेहरे पे उनके कंधे कितने झुक जाते हैं। No, that's where, just have to think that Pakistan team will have to pull their socks up. And somewhere down the line, even in this game, if they're going to let Delaney be there, anything can happen. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एंड नाउ देयर नीड्स टू बी समथिंग डन बिकॉज अब ये ओवर में बहुत रन आ चुके हैं। पिछले ओवर में भी एक छक्का आया था। सो बाउंड्रीज हैव स्टार्टेड कमिंग, albeit कंसिस्टेंटली नहीं आ रहे पर आना शुरू हो गए हैं। और अगर एक या दो ओवर और बाउंड्रीज के साथ आया तो आई एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू पैनिक अ लिटिल। Yeah, I agree. Pakistan is going to have that pressure feel a little bit because Delaney is hitting. He's not just defending or he's just not retreating the strike. So he's causing damage. And if they get a couple of good overs here, now I'm sure that Babar will be tempted to bring Imad Wasim because of two reasons. Shadab has gone for runs, and last few matches Shadab has never bowled at all. So the temptation will be to bring in Imad Wasim, and let's see how, especially someone like Delaney tackles him. जी एक और बार फिर से वही समझ नहीं आया बाबर की कैप्टनसी में। क्योंकि जो बॉलर कंसिस्टेंटली डालते आ रहा है पिछले गेम्स में आपने उनको नहीं दिया। और सामने ऐसा नहीं कि नेगेटिव मैचअप है, सामने आपकी पॉजिटिव मैचअप है। दोनों राइट हैंड बल्लेबाज है और इमाद वसीम को स्पिन और ट्रैक पे ड्राइनेस की जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज ही इज नॉट एनीवेज अ बिग टर्नर ऑफ द बॉल। वो एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं और बैटर्स को फंसाते हैं और थोड़ा स्विंग भी करते हैं। तो यहाँ पे अगेन शादाब खान को ओवर देना बाबर आजम की कैप्टनसी पे प्रश्न उठेंगे। और जैसे कि एबल ने कहा और मैं भी मानता हूँ कि इनको कैप्टनसी से दूर रखना चाहिए। क्रिकेट ही खेलो, कैप्टनसी ना करो। I agree, and I think if you look at that Ireland's win in 2009 against Pakistan, it's crazy because that's the same year when Pakistan went on to win the T20 World Cup as well. Ireland defeated them there. Ireland always causes an upset in a World Cup, at least one. जी बिल्कुल। एंड दिस वर्ल्ड कप बहुत सरप्राइजिंग रहा इनका परफॉर्मेंस कि किसी भी टीम को उन्होंने अभी तक जीता नहीं है एक भी गेम। कनाडा के अगेंस्ट हार गए थे एंड वो बहुत बड़ा लॉस था उनके लिए। Yeah, और I यहाँ was surprised. और I यहाँ was पे truly surprised. चेंज ऑफ पेस अब्बास ने दिखाया अपना ये वैरायटी, अपना ये स्किल जो हारिस रॉफ ने अभी तक नहीं किया। And here again,
What Pakistan should do is to pick up those wickets. There's still 10 overs in game. In T20, I again believe it's just one good knock. Like you saw Rutherford against West Indies. Against New Zealand, sorry. For West Indies against New Zealand. He just played that one knock, which got them to a 150 odd, which is good enough. So have to keep taking wickets. जी, बिल्कुल और यहाँ पे पाकिस्तान के पास पूरा मौका है कि आप अटैकिंग फील्ड सेट करें, आप पोज़ीशंस में फील्डर को रखें जहाँ पे आपको लग रहा है कि बॉल गिरेगा, आपको विकेट मिलेगी। यू हैव टू ट्राई टू मैन्यूवर द फील्ड एंड मेक समथिंग हैपन क्योंकि अभी तो आप फ्रंट फुट पे ही हो। तो आपको सेफ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको रन्स रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस विकेट सोचने That's हैं। top edge, and that's another four here from Adair. And yes, Ireland are getting these boundaries coming in every over, which is going to give them a lot of confidence now. जी, बिल्कुल पॉज़िटिव इंटेंट की हम बात करते हैं कि जब इंटेंट आप दिखाते हो तो कहीं न कहीं आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है एंड आयरलैंड पेइंग रिवॉर्ड्स ही रीपिंग रिवॉर्ड्स अभी बहुत अच्छी पार्टनरशिप ये है, 32 रन्स की पार्टनरशिप हो गई है 24 गेंदों में। With 10 एंड overs to go, I think Ireland are really looking to capitalize. Well, that's another poor delivery from Abbas Afridi down the leg side, slower ball. That's a wide. जी, वाइड बॉल और ये बहुत डेस्परेट डिलीवरी अब्बास की एंड I've थोड़ा-सा seen Abbas कंट्रोल ball a couple of times as well. He's not really impressed me a tad bit. I felt like guys like Mohammad Wasim Jr., who used to play for them, were much better. ओह! डेफिनिटली मोहम्मद वसीम जूनियर जो वर्ल्ड कप में ओडीआई वर्ल्ड कप में खेले थे, आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड और बहुत टाइम से इम्प्रेस्ड था मैं एंड पता नहीं क्यों आउट ऑफ द रेकनिंग चले गए और पाकिस्तान का यही कंप्लेन रहा है कि जो प्लेयर्स प्रॉमिस दिखाते हैं, टैलेंट दिखाते हैं, उनको आप बाहर कर देते हैं। I'm really shocked at that because expected him to have a longer career, especially in T20 format at least. But Abbas Afridi, yeah, he's gone. He has an economy of 9 in T20 cricket. T20s especially. It's not been kind of ball I would say, wow, take a look at me. There are better Pakistani bowlers than that. जी, बिल्कुल। And there's Naseem Shah's brother, if I'm not wrong, who I saw on under 19 cricket recently. That guy can be a good kid. Yes, I don't remember his name exactly. Ubaid, if I'm not wrong. एक और वाइड और अब्बास का जो यूथ हम कहते हैं यूथ और एक्सपीरियंस में जो डिफरेंस है दिख रहा है कि बाउंड्री के लिए जैसे ही उनको मारा वाइड्स 2 डाल दिए और कंसिस्टेंट लाइन नहीं पकड़ रहे लेग साइड पे उनकी गेंद गिर रही है सो अ वेरी गुड पेस फॉर आयरलैंड Oh, it's up in the air here. This could be a wicket. No, it's gone all the way for six. जी एक और बार फिर दोस्तों क्या सही आवाज आया था और ऐसा लगा था कि शायद हवा में बहुत ऊपर गई है गेंद दूर नहीं गई है बट एक और छक्का यहाँ पे एंड अगेन वही प्रश्न वही सवाल कि क्या बाबर आजम की कैप्टेंसी में क्या है मतलब आपने शादाब खान को इंट्रोड्यूस किया और प्रेशर रिलीज ओवर था वो पूरे तरीके से प्रेशर रिलीज ओवर था और जहां पे आपको थोड़ा कंट्रोल लेके आना था फिर से मैं मानता हूं कि यू शुड हैव ब्रॉट इन हारिस रॉफ और यू शुड हैव गॉटन आमिर हियर या इमाद वसीम टू ब्रिंग बैक सम कंट्रोल पर वही है कि बहुत सारी चीजें कैप्टेंसी में Jape through the offside, and he'll get double here. He's cut it through the offside here. Abbas Afridi bowling short. But yeah, they've gotten runs here, almost 10 runs in last 2 overs, almost 20 runs, 25 runs they've scored in the last 2 overs, which is very good. I mean, look at the recovery. They were 32 for 6 at the point, 75 for 6, now closing in on 100, but still 54 balls to go. Can they score another 75 runs? ये एंड इट आल्सो लुक्स लाइक कि जो पिच है वहां पे अब स्विंग और सीम को असिस्टेंस कम मिल रहा है एंड वही आपको लेंथ पकड़ना अगर आपने वो लेंथ नहीं पकड़ा तो यू विल सफर और सफर कर रहे हैं पाकिस्तानी बॉलर कंसिस्टेंटली कुछ लाइन और लेंथ नहीं डाल रहे हैं उनके प्लान समझ नहीं आ रहे हैं बॉलर्स भी
वाइड डाल रहे हैं, शॉर्ट डाल रहे हैं। The thing is now, Alan, that Pakistan will have to bowl 9 overs. So from that 7 overs will be between Haris, Abbas, and Shadab or Imad. Rest of the overs will be bowled by Amir and Shaheen. That's 2 overs. So Imad will have to bowl well. I think Imad should have been introduced way earlier in the attack. I think Imad is much better in terms of these conditions. जी बिल्कुल, इमाद वसीम आपके लिए एक श्योर शॉट। और अब फाइनली इन हाइंडसाइट बाबर आजम इज अ ग्रेट कैप्टन इन हाइंडसाइट। मैं हमेशा कहता हूँ कि गलती करने के बाद वो बहुत अच्छे कैप्टन है, बट गलती के पहले उनसे कुछ नहीं होता है। Imad is a smart bowler. He knows how to vary his pace. He knows how to bowl both to left-handers and right-handers. I think he's the best spinner they have in the team. बिल्कुल That shot again hit through the covers, but will he get double here? Or just a single? Uh, Imad bowls Delaney here, and Delaney is back on strike. And this is going to be an interesting matchup to watch how Delaney takes on Imad Wasim, because Delaney has been itching to score a boundary every ball since he's come to bat. बिल्कुल बिल्कुल, और उनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो 172 है। तो वो रुक के खेलने वालों में से तो नहीं लग रहे हैं इस पिच पे। Oh, that's दो up in the air and that's out. That is exactly what we were talking about. Ball stopped at him, got the leading edge, and that's out. जी, और यही चीज अगर 2 ओवर पहले आप करते तो 20 रन 25 रन कम हो जाते आपके। एंड अगेन बाबर आजम की स्टूपिडिटी का ये बाबर आजम की स्टूपिडिटी ये विकेट दर्शाता है कि क्यों आपने सबसे बेस्ट ऑप्शन आफ्टर द पावर प्ले को नहीं इंक्लूड किया इनटू द अटैक। Imad has come and he's struck. That's Imad's philosophy. He's an experienced T20 cricketer across the world, and he shows what he can do when it comes to hitting, taking on matchups as well. Gary Delaney is out for 31 here and 76 for 7 Ireland. And I think that's where I think Ireland will be very happy. Ireland will feel like, we've done our, this is a partnership we got as a bonus. Let's get to 100 now. I mean, from Pakistan POV, yeah, obviously Pakistan are still in the game. Pakistan is still the dominant team. But Ireland will be much happier with that partnership. बिल्कुल 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 खुश होंगे। एंड एटलीस्ट जब अगर आप 3 फिगर पहुंचते हो तो वो साइकोलॉजिकल थोड़ा एडवांटेज बन जाता है। एंड हमें पता है पाकिस्तान की बैटिंग अनप्रिडिक्टेबल रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। जो चीजें हमने नहीं सोचे थे वो हमने देखा है होते हुए। तो आप कभी पाकिस्तान क्रिकेट को सरप्राइज देने से राइट ऑफ मत करना दोस्तों, क्योंकि आपको अगर लग रहा हो कि हाँ ठीक है चल पाकिस्तान कर लेगा, तो फिर बाबर कहेगा कि नहीं करेगा, मैं नहीं करेगा और मेरी टीम भी नहीं करेगी। एंड इन दी एंड अगर उनकी टीम ने 100 रन के नीचे भी आउट कराया आयरलैंड को, Oh, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम कहेंगे कि bowling was not up to the mark, which we've seen has been consistent. I agree. Because there was a video जो दिनेश कार्तिक बता रहे थे क्रिकबज़ लाइव पे कि उन्होंने बाबर आजम का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना या पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस सुना था। एंड डीके का ये कहना था कि बाबर आजम के बॉडी लैंग्वेज से और उनके बात करने के तौर और तरीके से ये नहीं लगता है कि ही हैज कमांड ओवर हिज प्लेयर्स। और ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं। ही रादर थ्रोज देम अंडर द बस कि यार इन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो हम हार गए। तो पर हमारी बैटिंग तो सही थी, तो अगली बार हम देखते हैं कि क्या करना होता है। एंड मे बी Yeah, दैट्स काइंड ऑफ द बेस्ट लीडर। I agree. I have a very interesting comment to make here. All the teams except for US where Amul sponsorship are all out. सॉरी, ऑल द टीम्स। Except USA where Amul sponsorship are all out. The USA is the lucky charm. Yeah, it's जी, funny और though. 12 ओवर खत्म हो गए एंड आयरलैंड का रन रेट इज अबव अ रन अ बॉल दोस्तों। पर अनफॉर्चुनेटली गलत टाइम पे गैरेट डेलनी का विकेट खोया उन्होंने। देखते हैं कि कहां पर जाता है ये टोटल, क्योंकि बल्लेबाज तो अब खत्म हो चुके हैं। अब तो टेल चालू हो गया उनका। देखते हैं कि नाउ कैन पाकिस्तानी पेस अटैक जो बहुत फेमस है रैप अप दिस टेल अर्ली। I really hope
Pakistan are able to trap them up under 100. That's 24 runs from now. If they don't, they'll be disappointed. 32 for 6 and letting them score 100. Again, very bad. I mean, they should get these remaining 3 wickets quickly. जी बिल्कुल, मार्क एडेर ऑन स्ट्राइक, आरएस रॉफ का पहला बॉल ओवर का और डॉट बॉल यहाँ पे। एंड एक और बार फिर से हमने देखा कि रिजवान को जब लगती है तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ही लगती है। ऐसा लगता है कि सिर्फ मोहम्मद रिजवान स्कॉटलैंड No answer to that. And now Harris Rock will feel a lot more confident after that particular ball is ball. जी बिल्कुल, आरएस रॉफ और अच्छी बॉलिंग से। That's another ball. It's just guided to the third man here. I think Pakistan would want McCarthy to be on strike because Markadin has been batting pretty well. He's been a better batter right there. If you look at the context of the game as well, Markadin is a much better batter to take the game on. But if you look at from another end, other perspective, Pakistan would want to just get them out under 100. Because sometimes what happens is you just going to target one particular batter and to keep the main batter away. In that particular course, you just give away too many runs as well. दैट्स ट्रू। बहुत सही कहा आपने कि उनको अपने प्लान में ये रखना होगा कि हमको विकेट्स लेने हैं, पर डेस्परेट नहीं होना है। बिकॉज T20 क्रिकेट से एबल ने कहा कि एक ओवर या एक प्लेयर आपसे पूरा मोमेंटम छीन सकता है एंड फिर आप पीछे भाग रहे हो गेम के पकड़ने को। I think Ireland should just keep hitting. That's the best opportunity for them. जी, पर ये अच्छा गेंद मैकार्थी को, उतना ही अच्छा डिफेंस मैकार्थी का। जी, क्या लग रहा है एबल आपको कि क्या होगा फाइनल टोटल, फाइनल स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में आयरलैंड का? Beautiful ball from Harris Ruff here, but yeah, I think it'll be somewhere 105 to 115 is what I'd like to see Ireland score here. And that'll be a decent recovery as well from 32 for 6, 106, 112. But I don't think that's good enough. I still think 150. It's a 150, 160 pitch here in Miami today. From whatever I've seen in this pitch, right, the pitch has really offered pieces up front, but if you're ready to apply yourself, you're getting the runs you want. So no half measures. बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। कोई हाफ मेजर्स नहीं। यहाँ पे पूरा मौका है बल्लेबाजों के पास रन बनाने का, बट पाकिस्तान आई वुड से कि 95 के नीचे ऑल आउट करना चाहेगा इस टीम को, पर यहाँ पे तो 2-2 रन निकाल रहे हैं टेलेंडर भी मैकार्थी। पर अच्छा ओवर, ये सिर्फ 3 रन आए इस ओवर में, 13वें ओवर में। और it didn't take too long to get Shadab into the deck, but it didn't take too long to remove him from the attack as well. I agree, but Shadab is, one thing which I felt was why was Shadab even there in the team? It didn't make any sense to me. Like, the last game, he did not ball. Before that, he did not ball. After that, you just had him as a team as a batter. So I really don't know his role at this point. Now Imad is back to ball again. I'm expecting him to really do a job here. That's a good ball. Ball really slow. It's a very smart cricketer, Imad Wasim. I thought at one point he could have even captained Pakistan. डेफिनेटली, पर उनका लगता है कि फिटनेस ने उनका साथ नहीं दिया। अपने फिटनेस को लेके ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स Yeah. अनफॉर्चुनेटली। एक बहुत फेमस क्लिप आया था वेयर इमाद वसीम वाज सीन स्मोकिंग अ सिगरेट ड्यूरिंग अ पीएसएल गेम, तो वो आपको दर्शाता है कि क्या माइंडसेट है इन प्लेयर्स का डोमेस्टिक अपने लीग्स में और अपने सर्कल में।
I saw तो another clip where Azam Khan was eating hot dogs on the night of Pakistan was India after Pakistan. There's a big shot here from Adair, and that's up in the air. Oh my gosh, that was almost comedy of errors where Afridi collided. Was who was that? That was Usman. Yes, both have gotten hit right now. Oh my word! Oh word! I और really दो can't make. दो नंबर यही बात है पाकिस्तान। पाकिस्तान आपको कभी एंटरटेन करने से रुकेगा नहीं, पर लगता है कि वहां पे उस्मान खान को ज्यादा चोट पहुंची है बिकॉज शाहीन अफरीदी I'm इज just बैक ऑन हिम। surprised because there was no calling whatsoever over there, and I'm just really surprised at the way in which how that catch was taken. Because I'm just shocked, man. I'm just really shocked. जी एंड वहां पे शाहीन की कोई गलती नहीं थी दोस्तों, बिकॉज एट नो गिवन पॉइंट इन टाइम वो कैच उस्मान खान का था। शाहीन अफरीदी के सीधा हाथ में आई थी वो गेंद, उन्हें ज्यादा हिलना नहीं पड़ा, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल पकड़ा वो, एंड उस्मान खान पता नहीं क्या देख रहे थे, क्यों जा रहे थे कैच के लिए, एंड इट कुड हैव बीन अगेन अ सईद अजमल एंड शोएब मलिक मोमेंट, बट I नॉट agree. नॉट टू बी। एंड इमाद वसीम एक और बार फिर बता रहे हैं क्यों बेस्ट बैट थे बाबर आजम के लिए मिडिल ओवर्स में। I also feel, to a large extent here, uh, someone like Imad Wasim, if he would have been brought in 2 overs earlier, this would have been a much different game. And at least this would have ended, the innings would have ended at least 10 minutes earlier. Probably their final score could have been somewhere around 78, sorry, 79 to 85. Yeah, if this was something related to run rate, I would have really blamed them even more. But now, just inconsequential, I don't want to really be more critical on them. जी और दोस्तों 13.5 ओवर खत्म हो चुके हैं। 79 फॉर 8 है आयरलैंड का स्कोर, और मैंने प्रिडिक्ट किया, मेरा प्रिडिक्शन ये है कि आयरलैंड का स्कोर ज्यादा से ज्यादा 95 होगा। एंड इट लुक्स लाइक इफ्तिखार अहमद फील्ड पे आ चुके हैं, उस्मान खान विल गो ऑफ द फील्ड, तो ये अच्छे साइंस नहीं है उस्मान खान के लिए। And again, just talking about Usman Khan in particular, just baffled by his selection in Pakistan team. He was supposed to play for UAE. He was a UAE number 3 batter. Just because he scored a couple of hundreds in PSL, just ridiculous. That's out. That I'm pretty sure that's out. That should have been given out. Oh, Pakistan do not have any reviews left, or do they? नो दे डू नॉट, एंड मुझे लगता है कि जी, और ESPN पे अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे बता रहे हैं लोग के जो उस्मान खान का पैर था वो फंस गया था कैच पकड़ते टाइम, और उसके वजह से चोट पहुंची है उन्हें। होपफुली नथिंग टू मेजर फॉर उस्मान खान, और अगर मेजर हुआ भी तो उस्मान खान अपने आप को ही दोष देंगे। But yeah, I'm just talking Usman Khan. I just feel I don't find him any fascinating. Scoring runs on those placid wickets in PSL, and oh, that's out. Oh my word, that's McCarthy who's been dismissed. Imad Wasim has picked up 3 wickets since he's been brought into the attack. Absolute class from Imad Wasim here. 80 for 9 Ireland here, and just 1 wicket away from a ball out. बिल्कुल सही एबिल ने कहा, और दोस्तों ये इसी के लिए हम इमाद वसीम के शाउट्स दे रहे थे, इसी के लिए मैं कह रहा था कि इमाद वसीम को लेके आओ। एंड अगेन ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना है पाकिस्तान को लेके, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आउट हो चुकी है। ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है पाकिस्तान का कंपेयर टू जो परफॉर्मेंसेस उनने किए हैं पिछले गेम्स में। और Pakistan should be very happy with this performance. I mean, they brought the best performance from the last game and they're out. जी बिल्कुल, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पे। एंड आयरलैंड का स्कोर दोस्तों लग रहा है कि 100 रन तो नहीं, शायद 90 रन तक भी नहीं पहुंचेगा। देखते हैं कि अब अगले ओवर में कौन आता है। हारिस रॉफ भी आएंगे मैं मानता हूँ,
या मोहम्मद आमिर को भी लेके आ सकते हैं, बिकॉज अभी एक ही विकेट बचा है आपको, यू हैव टू गो फॉर द Yeah, they किल. should now look for the kill. Just bring in Ahmed and Shaheen. Finish it off. I mean, be ruthless as possible at least here. I mean, what is there to lose here? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू हैव नथिंग टू लूज. आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है. आप अपने Oh, प्राइड के लिए Ahmed खेल is रहे हैं, अपने लिए खेल रहे हैं, अपने देश के लिए खेल रहे हैं, जीत के लिए खेल रहे हैं, तो finish the innings as soon as you can and finish this total as soon as you can. Yeah, I really hope they do because what's happening is just some. Yeah, Ireland has been poor. Ireland have been poor today. I mean, I just in criticizing Pakistan. Let's not forget Ireland has just been. It's been comical today the way they batted, and throughout the tournament for that matter. बिल्कुल, पूरे टूर्नामेंट में उनके बल्लेबाजी ने उनको निराश किया है. मैचेस जो उन्होंने हारे हैं अपने बल्लेबाजी के पुअर फॉर्म की वजह से. एंड यू कांट ब्लेम द टेलेंडर्स टू गेटिंग आउट फॉर गेटिंग आउट टू इमाद वसीम. अगर मैं कार्की की मैं बात करूं तो दे आर नॉट हियर टू विन यू गेम्स विद देयर बैट, दे आर हियर टू विन यू गेम्स विद द बॉल. एंड बालबोनी, जैसे कि हमने कहा, एक बहुत निराशा लाइक परफॉर्मेंस उनका, पॉल स्टर्लिंग का भी. एंड पूरे आयरलैंड से भी अगेन this green battle has been won dominatingly by Pakistan, at least in the first innings. So I think Harisov should bowl a little bit more fuller here. And what he's trying to do is to ball bounce, but he's not going to get wickets here. Again, Harisov hasn't been very impressive at all today's game. Exactly. मैंने वही कहा था कि देखिए ये रन इन, जो अभी रन अप पे हम देख रहे थे, एनर्जी लेके आ रहे हैं, या जो क्रीज पे उनका रिलीज है बहुत सही है, पिच से भी बाउंस बहुत एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पर आप ये सब डिलीवरी डाल के टीम को क्या विकेट दे रहे हैं? नहीं. एंड टेल एंडर्स है, उनको पेस की आदत नहीं होगी. आपके पास इतना कुछ है, आप स्टंप्स पे एम करो, एलबीडब्ल्यू के लिए एम करो, आप विकेट्स बोल्ड के लिए एम करो, पर यहाँ पे आपको बस स्लोली डिलीवरी डालनी है जो अच्छा लगेगा. I agree. And I think that's where they made a big mistake in terms of, uh, maybe he would have gone to Shaheen right now. Not a big mistake, I would say, but be ruthless. एग्जैक्टली, दैट्स द डिफरेंस. वही ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा अंतर बना लेती है बाद में, क्योंकि बड़े मैचेस में, बहुत क्रंच सिचुएशंस में आपको ये कॉल्स लेने होते हैं, और अगर आप ब्रेव नहीं हो ये कॉल्स लेने के लिए इतने कंफर्टेबल सिचुएशन में, तो वहां Harris is पे जब running आप in. प्रेशर में रहोगे तो कैसे लोगे वो Well डिसीजन. played here from Ben White. एंड एक और बार फिर हारिस रॉफ का बहुत प्रिटी ओवर रहा है दोस्तों, बट प्रिटी ओवर डू नॉट गेट यू विकेट्स. One thing you look about Imad Wasim today, he's ball really slow and he's really weighed the pace. एंड उन्होंने स्टंप्स लाइन पे ही डाला है. उन्होंने कोई वाइड नहीं, शॉर्ट नहीं, कुछ नहीं, फ्लाइट करके बस स्टंप्स की तरफ डाला है, एंड ही हैज फोर्स्ड द बैटर्स टू मेक एरर. I agree. And that's a good shot from Joshua Little here. And they'll get a boundary here to end the over. So Ireland still fight on. They've survived another over with 1 wicket remaining, 85 for 9 at the end of 15 overs. And yeah, Ireland fights on. I mean, Pakistan could have got them all out again by bringing in a tougher bowler, but Pakistan decided not to. So we don't really blame them. Pakistan maybe want to give chance to everybody to bowl. So yeah, that's all. जी, बट हारिस रॉफ ने अपना स्पेल खत्म कर लिया, 4 ओवर 17 रन 1 विकेट पर. अगेन Yeah. not happy with this spell at all. But The way I'm just a little confused with the way in which how what Pakistan trying to do here. Why to give Harris off that over? I mean, you could have really given the best chance for maybe Shaheen to pick up a 4 for here, or even Amir to pick up a 3 for. I mean, that's a better opportunity. And I think they're better. I think Imad is also not a bad option. Continue with Imad, but on the other end, well, that's out. I think that's out. Is there an edge over there? No. nope. Again, ooh, that's no reviews left, and it was off the thigh pad. One more dot ball.
Imad Wasim has been nothing short of impressive. I agree. Imad Wasim क्या has been the best bowler for them in terms of spin in this entire tournament. जी हाँ, और शादाब को स्लिप्स पे खड़े खड़े देखना होगा और कुछ सीखना होगा कि ऐसे लेंथ और लाइन पकड़ के डालते हैं. What can Ireland do here? What will they be looking to do? It's almost four and a सर्वाइवल half overs to play. सर्वाइवल पर मैं टेलेंडर से सारा सर्वाइवल तो नहीं एक्सपेक्ट करूंगा. इवन वो अगर एक ओवर सी ऑफ भी कर लेंगे तो वो आपके हम कहते हैं ना Ooh. एक होता है कि दे नीड टू एटलीस्ट स्विंग देयर बैट वंस इन देयर इनिंग्स. एक ब्लाइंड स्लॉक तो बनता है कोई भी टेलेंडर बल्लेबाज हो तो. I think you have to. Ooh, another defense here. जी बहुत अच्छी ओवर ये पर विकेट नहीं ले पाए इमाद वसीम. पर And येट Imad अगेन Wasim is hitting the right lengths again and बिल्कुल again and again. He बिल्कुल deserves a 4 here, in all honesty. If he gets it, that's going to be terrific. Ooh. It's orthodox left arm spin here. Just classic. But here again, I would love to see Ahmed ball or Shaheen ball here. a very good delivery to end इमाद वसीम का स्पेल दोस्तों. और स्पेल नहीं सॉरी ये ओवर 3 विकेट 5 रन 3 ओवर. और पाकिस्तान सोच रहा होगा कि यार अभी तक ये लोग बैटिंग कैसे कर रहे हैं. मतलब 6 विकेट गिरा दिए थे तुमने जब 8 ओवर थे और अभी डबल 2 ओवर हो गए हैं और सिर्फ 3 विकेट ले पाए हो. I agree. I also feel here, there's one thing which I'm really confused about is, oh yeah, Amir is finally back. That was my confusion. Why is Amir not coming back? I just नहीं thought they were बिल्कुल again going to Abbas and लगता put him. है जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई ना कोई डग आउट में से बाईस्टास का लाइव सुनता ही होगा. क्योंकि जब भी हम कोई चीज कॉल करते हैं तो अगले ओवर में वो हो ही जाते हैं. तो Yeah, यू आर वेलकम. and I'm glad. I'm just glad that Amir is back. Amir is a good player to dismiss Taylor. I mean, I don't know whether he gets a wicket or not. He's a better opportunity here to pick up a wicket. It's just one बिल्कुल wicket to go. Do not drag the game so deep. जी. आपको ये देखना होगा कि जो कैप्टन मूव लेता है आपको वो मूव मे बी 7 out of 10 टाइम्स आपको देगा जो आपको आउटकम चाहिए. बट 3 out of 10 टाइम्स नहीं भी करेगा. पर आपको वो प्लान पे कमिट करना और एग्जीक्यूट करना वो बहुत बड़ी बात होती है. तो फाइनली ग्रेट कॉल. एंड आमिर already still making the batters struggle with those lengths floating outside of. Amir is hitting the right length here. Amir has really gotten the advantage as well. Bowling those tight lengths. Ooh, pulled up there. जी. और अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आमिर जो रन अप भी ले रहे हैं तो शाहीन अफरीदी उनसे अंडर कुक लग रहे हैं आमिर से. और आमिर की उम्र बहुत ज्यादा है. ऐसे नहीं है कि यंग प्लेयर है. Amir has played 2009 World Cup, T20 World Cup. बिल्कुल. और वहां पे एक फॉल स्टार्ट आमिर के लिए दोस्तों. बट अभी तक अच्छी ओवर ये सिंगल नहीं आया. एंड हम जानते हैं कि टेलेंडर्स जब तक रन आ रहे हैं तब तक सही है. बट जैसे ही एक स्पेल आ जाता है जहाँ पे ड्राई हो गए रन तो आप समझते हैं बैड शॉट ऑन द होराइजन है. Very surprising. I don't know what Pakistan are appealing for here. Went और from his पाकिस्तान shoulder. के पास रिव्यू नहीं है. और क्या क्यों अपील कर रहे हैं समझ नहीं आता. भाई रिव्यू नहीं है तुम्हारे पास तो अपील क्यों कर रहे हो. That's nowhere close to the bat. I don't know what they appeal for here. But again, it's Pakistan cricket at the end of the day. They appeal for the most insane things.
जी, बिल्कुल। और यहाँ पे पाकिस्तान को पता ही नहीं था कि उनके पास रिव्यूज़ नहीं है। Ooh, another good ball from Amir here. Very unlucky not to get a wicket this over thus far. जी, बिल्कुल। और दोस्तों अब 9:30 बज चुके हैं, डेढ़ घंटा हो चुका है, पर अभी तक 17 ओवर खत्म नहीं हुए हैं। वेरी स्लो ओवर रेट यहाँ पे पाकिस्तानी बॉलर्स का, और ये होगा ही क्योंकि मेनली उन्होंने पेसर्स ही यूज़ किए आज के गेम में। यहाँ पे पाकिस्तान आखिरी विकेट का तलाश में, और they've been struggling to get the last wicket for some time now. जी, बिल्कुल। ऑलमोस्ट 3 ओवर हो चुके हैं, अभी तक विकेट नहीं आया है। एंड वही मैं इसलिए समझ नहीं पाया कि हारिस रॉफ का जो ओवर था, उन्होंने बहुत वेस्टफुल लेंथ्स डाले थे। अगर आपके पास पेस है तो आप शॉर्ट लेंथ डालो, शॉर्ट बॉल डालो, शॉर्ट लेग रखो, फील्डर्स अराउंड द बैटर रखो, थोड़ा टेलेंडर को डराओ, इंटिमिडेट करो, पर यहाँ पे कोई अटैकिंग माइंडसेट नहीं लग रहा है। ये बिल्कुल है। I think from Pakistan's POV, what they want right now is, just keep things simple. Do not try to do something out of the box. What Amir did was excellent. You will get a wicket. Maybe ball a occasional or Yorker maybe to one of these batters, but these are tailenders. और मे बी इवन अ चेंज ऑफ पेस दैट गॉट Amir द विकेट। Yeah, I agree. जी, पर 17 ओवर हो चुके हैं दोस्तों, अभी भी लास्ट विकेट बाकी है पाकिस्तान को लेने के लिए। आयरलैंड स्टिल फाइंडिंग देयर वे थ्रू। 18 बॉल हो गए, 9 रन की पार्टनरशिप हो गई है यहाँ पे। बट आई फील लाइक कि ये ओवर में, इमाद वसीम के ओवर में विकेट आने वाला है। And Shaheen is back to बिल्कुल ball नहीं, now. शाहीन हैज कम एंड अगेन अ ग्रेट कॉल आई फील। Interesting to see how. Ooh. जी, और शाहीन अफरीदी रनिंग इन, पहले गेंद के लिए बहुत क्लोज ये गेंद, और यही देखना था हम दोनों को, जिसकी हम डिमांड कर रहे थे, यॉर्कर। एंड थोड़ा अगर आप चेंज करेंगे अपने बॉल्स के लाइन और लेंथ को, तो यू कीप द बैटर गेसिंग एज वेल। Well, that's up in the air. I think that's a good hit from Joshua Little. And he'll get boundary here. A good last wicket partnership here, in all honesty. बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने एबल। और ये पाकिस्तान सोचते रहेंगे कि ये बॉलर्स भी हमको चौके मार रहे हैं, तो दिस इज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। I agree. And here, once again, the confidence shown is impeccable. जी, और यहाँ पे कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी के जो फील्डर थे वहाँ डीप में, वो एफर्ट लगा सकते थे बॉल को रोकने के लिए, बट Ooh. And Joshua Little can handle himself with the bat a little bit. So I think they should look to get Ben White out. दे शुड लुक टू गेट एनीवन आउट। आई मीन, इफ दे फील लाइक दे कांट गेट अ टेलेंडर आउट, तो वो बहुत सरप्राइजिंग चीज है। एंड अगेन शाहीन अफरीदी, यू कैन सी कि वो यॉर्कर लेंथ को डालने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टंप्स पे अभी तक वो परफेक्ट यॉर्कर लैंड नहीं हुआ है उनका।
And Shine Afridi runs in again. And this is well dabbed, I would say, by Ben White. Just kept it out. Because he is expecting a Yorker length every ball. बिल्कुल. एंड अगेन द कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं कि बहुत वक्त लगा दिया है यहाँ पे अगली गेंद डालने में, और फिर से यॉर्कर डालने की कोशिश पर फुल टॉस पड़ गई एंड अंडरकुक्ड शाहीन. Again, balls outside the off stump. Ben White leaps it. Ireland survival is going pretty well thus far. बिल्कुल. एंड इफ दे डू सर्वाइव तो बहुत खुश रहेंगे कि हम 20 ओवर खेल के आए हैं आफ्टर द पावर प्ले, क्योंकि 32 पे 5 विकेट खोए थे आपने पावर प्ले में, और उसके बाद भी आप 20 ओवर खेल के आ रहे हैं. तो दैट्स ऑन द बॉलिंग टीम. बैटिंग टीम को आप कुछ नहीं कह सकते. Yeah, I agree. I mean, there was a small partnership by Delaney and Adair also in between this. But yeah, another Yorker attempt, but keeps it out. Ben White will take a single. 95 here at the end of 18 overs with 2 overs to spare. Pakistan would want to get them under 100 here. पाकिस्तान वुड वांट टू गेट देम बिफोर उनके 20 ओवर खत्म हो जाए. कि 20 ओवर कैसे पाकिस्तान फील्ड पे रह सकता है मुझे समझ नहीं आ रहा. एंड आयरलैंड भी अगर 100 के ऊपर जाती है एबल, तो सोचेंगी कि शायद हमारे पास गेम में चांस भी है. I don't know if there's a genuine chance, but all that I can say is Ireland will be pretty happy from that recovery. बिल्कुल बिल्कुल. जेन्यून 100% चांस तो नहीं है उनका जीतने का, बट जैसे हम जानते हैं पाकिस्तान क्रिकेट और उनकी बैटिंग, और जिस पूरे सर्कमस्टेंस और सिचुएशन को अगर आप कंसिडर करें तो आयरलैंड जरूर वॉक आउट करेगा इनटू द पिच, इनटू द ग्राउंड, सॉरी, सेकंड इनिंग्स में, कि वी कैन डू समथिंग हियर, वी माइट बी एबल टू डू समथिंग. पर देखते हैं. Abbas Afridi is here to ball. जी, और मुझे उम्मीद तो नहीं है कि अब्बास अफरीदी विकेट्स ले पाएंगे अपनी टीम के लिए, बट आई बी हैप्पी टू बी प्रूव रॉन्ग. I think Abbas Afridi should look to take a wicket here. Because they're not had a very good day with the ball. This is the best opportunity to get a wicket. बिल्कुल बिल्कुल. और Runs in फिर से again. वो बैक ऑफ द लेंथ वाली डिलीवरी डाली Oh, बैट that was a run out chance. बैट से दूर, पर वहां पे कोई आपको गुंजाइश नहीं है विकेट की. आप आपके चांसेस कम कर रहे हैं अगर आप स्टंप से दूर डाल रहे हैं टेल एंडर को. रिप्ले में I तो think दिखा कि कोई चांस नहीं था वहां पे. oh, that's a full toss. I think that's a no ball as well. जी, और शादाब खान पाकिस्तान के बेस्ट फील्डर्स में से एक है. अनफॉर्चुनेटली वो थ्रो उन्होंने मिस किया. और जॉश लिटिल ने वहां पे सिंगल लेने से मना कर दिया एबल. दैट्स शो ऑफ एंड साइन ऑफ एब्सोल्यूट अल्फा माइंडसेट. एंड There's a reason because he's just hit the next ball for six, and व्हाट अ that's शॉट. just incredible from him. And I think that's what you would want to give it to him. He's a better batter. There's no doubt about it. या एंड दे जस्ट शो द रिप्ले ऑफ जो प्रीवियस डिलीवरी जो फुल टॉस डाली थी, और आपने कहा था कि नो बॉल लग रहा है आपको, वो बहुत बड़ा नो बॉल लग रहा है मुझे. एंड सरप्राइजिंग कॉल एम्पायर का. बट यहाँ पे देखिए जोशुआ लिटिल नाम में है, बट बड़े बड़े छक्के मार रहे हैं दोस्तों. वेरी वेरी गुड शॉट. और आयरलैंड का वो जो टोटल है अब 102 है, 100 भी नहीं. और मैंने कहा था शायद 95 के नीचे ऑल आउट होंगे, बिकॉज मैंने बैक किया था पाकिस्तान और उनके बॉलर्स को. बट जैसे कि
हमने बहुत बारी देखा है, पाकिस्तान क्रिकेट इज पाकिस्तान क्रिकेट, एनीथिंग इज पॉसिबल. Yeah, I mean, they dragged the game well too much. I felt last 20 odd runs with this last wicket partnership. They should chase it down comfortably, but if you ask me, no, that was not the right way to ball. They bought a lot of balls back of the length. They target the stump as well. एग्जैक्टली, आई मीन आई वुड अंडरस्टैंड इफ आप वो लेंथ बैटर्स को देते तो, बट यहाँ पे Yeah. टेलेंडर को तो आता ही नहीं है यार बैट पे बॉल लगाना, और तुम उन्हीं को वो लाइन और लेंथ डाल रहे हैं. परप्लेक्सिंग कैप्टनसी, परप्लेक्सिंग थॉट्स. So the game has come to the 19th over with 6 balls in hand. How many more can Ireland score? I mean, I would give them a 10-run over. बिल्कुल, और I यहाँ think पे they can फुल score. टॉस एक और बार और सिंगल दे दिया आपने जोशुआ लिटिल को. अगेन एबल, अगर आप या मैं कैप्टन होते तो शायद हम जोशुआ लिटिल पे प्रेशर बनाते कि फील्डर्स को क्लोज इन लेके आते, उन्हें सिंगल से रोकते, एंड मे बी वहां पे वो कोई गलती कर बैठते, क्रीज से बाहर आते, पैनिक कर लेते, रनआउट का चांस मिलता. यही छोटी छोटी चीजें हैं अगर आपको गेम को कमांड में लेना है अपने. एंड अगेन पाकिस्तान जस्ट डजंट सीम टू वांट टू डू दैट. I mean, I would say they would have tried a lot of things. One of them was also to maybe, try a little different, go to a Shadab maybe here. Because leg spinner was always going to be difficult for a Daniel to hit. But now they're going to Imad in the last over. And Josh Little has played a reverse sweep up in the air. Will get double, I hope. He comes back for two, and he makes it. He makes it quite comfortably. Good shot, good thinking. Joshua Little is batted brilliantly here. 21 runs of 13 balls. Really taken the mantle, even though he comes to bat at number 9, number जी, 10, I believe. Comes to bat at number 10. बिल्कुल सही कहा आपने. नंबर 10 पे आते हैं जोशुआ लिटिल, एंड आपको उनके जिगर की तारीफ करनी होगी, क्योंकि योर टीम इज ऑलमोस्ट डाउन एंड आउट. आप सोचते रहेंगे कि यार क्या, मतलब मेरे बैटर्स ने तो रन नहीं बनाया, पर यू कैन सी कि ही इज आउट टू compete. वो खेलने नहीं, वो compete करने आए हैं, वो जीतने आए हैं, और अपनी टीम के लिए सब चीजें रेडी करने के लिए आए हैं वो. एंड ही इज ट्राइंग टू हिट रिवर्स स्वीप्स, ही इज ट्राइंग टू हिट सिक्सेस. वो डिनाई कर रहे हैं सामने वाले बल्लेबाज को कि नहीं मैं मारूंगा. और अगेन 2 अटेम्प्ट्स किए रिवर्स स्वीप मारने के. There's इट another वोंट कम sweep ऑफ एवरी टाइम. attempt as well. Imad has balled well thus far. I think he's looked really good. But yeah, Josh Little, credits to him for dragging the team so much. I don't think it's good enough at the end of the day, but at least something to ball it. बिल्कुल, एटलीस्ट यू कैन होल्ड योर हेड हाई एंड से कि हमने गिव अप नहीं किया, हम हार नहीं माने, हमने पूरे 20 ओवर खेले, और हम आएंगे और पाकिस्तान को हम तरसाएंगे वो ये 100 रन बनाने के लिए. दैट इज व्हाट दिस लुक्स लाइक फ्रॉम द आइलैंड टीम. तो अ वेरी हार्टी एफर्ट. Ooh, that's a good ball. It's so mature, Imad Wasim, just slowing the ball. I mean, I always feel spinners have a good role to do in the death overs nowadays because ओके, they can really take the pace off, and all the batters are looking at pace on the ball. जी जी बिल्कुल आपने That's a सही कहा, good क्योंकि over अगर from Imad Wasim. Just three of the last over. End of 20 overs, 106 for 9, 107 for Pakistan to win. जी दोस्तों 107 रन, और आप देखेंगे तो 32 फॉर 5 थे, और बाकी के जो 4 विकेट है But 32 उनसे for 6. उनसे जी 32 पर 6 थे, और उनसे उसके बाद 70 रन बने हैं जस्ट 3 विकेट के नुकसान पे. तो अमेजिंग अमेजिंग कमबैक आयरलैंड के इस इनिंग्स में. पहले 10 ओवर पाकिस्तान के थे, बट बाकी 10 ओवर पूरी तरीके से आयरलैंड के ही थे. इफ Yeah. कुछ भी रहा तो इमाद वसीम का इंट्रोडक्शन ने उनको विकेट्स दिए 3, नहीं तो उनके पास दिखाने को कुछ नहीं था. तो पाकिस्तान विल बी अनहैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस, बट एबल अ ग्रेट फाइट फ्रॉम आयरलैंड. और सेकंड इनिंग्स देखने में थोड़ा मजा तो आएगा, क्योंकि अगर कम टोटल होता 60-70 रन या 80 रन, तो हम Yeah. If इतने Pakistan can, एक्साइटेड नहीं रहते. if Ireland can pick up like 3 wickets in the power play, 4 wickets in the power play, game on. बिल्कुल 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 सही कहा आपने, गेम ऑन हो सकता है दोस्तों. तो ये था लाइव कमेंट्री सेशन इस पहले इनिंग्स का, पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड. डेड रबर था. बहुत लोगों ने कहा रहेगा कि इस मैच में कोई स्टेक्स नहीं है, देयर इज नथिंग टू प्ले Yeah. फॉर.
there's pride to play for. आप अपने देश के लिए खेल रहे हैं, तो देखते हैं कि can Ireland pull off another upset with पाकिस्तान, कि क्या पाकिस्तान फाइनली जाएगा घर खुशी के साथ। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं और एबल अलविदा कहेंगे आपको। ग्रेट टू हैव यू एबल, इट वाज अ वेरी Great वेरी to have नाइस। you, man. Great to have you. See you. तो दोस्तों मिलते हैं अगले लाइव सेशन में। अलविदा।